अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ है अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है चर्चगेट विद बोमन ईरानी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एक्सप्लोरिंग चर्चगेट विद बोमन ईरानी एंड कामिया जानी। तेरी गली में। So start करते हैं। लाइन कटा नहीं ना किसका? ये तो बोले कोई एक्टर आ गया, लाइन काटा, जंपिंग द लाइन। Which ice cream would you like to have? Pista. Pista? One walnut and one pista. 1953 established. K. Rustam's. Ice cream sandwich. Oh hi guys. Well, this is the show तेरे गली में. And are you wondering कि मैं ताज महल पैलेस के फैंसी रेस्टोरेंट में क्या कर रही हूँ? Well, जो मेरे गेस्ट हैं वो आज तो बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, बट किसी वक्त पर यहीं पर एक वेटर हुआ करते थे। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Oh, I have a very handsome server here. Yeah, all that is fine, but do leave a nice handsome tip. For sure. So very warm welcome to Curly Tales. Thank you, Kamiya. Does this place make you feel nostalgic? पुराने दिन याद आ रहे हैं? I am actually suppressing my emotions, believe it or not. Really? Yeah, this is the exact place where I used to work. I used to serve drinks and snacks because this used to be called, now it's called the souk. I think it's Middle Eastern food, if I'm not mistaken. Yeah. Here at the Taj, the top floor. Beautiful view, the best view in this. And it was the Apollo bar. And before I went next door, because that was my thing, I needed to work at the French restaurant, the best restaurant in the country. It was right next door, the Rendezvous. They made it into a banquet hall now. Yes. Which I think we should go over there. Yeah. And so, you know, this is the show Tere Gully mein. The intent of the show is walking down the memory lane. Right. So that is exactly what we are doing, and I'm so glad. And we picked a place which is very close to your heart. तो कितने साल के थे आप जब आप यहाँ काम करते और कितने साल आपने यहाँ काम किया? यहाँ पे 6-8 महीने काम किए। अच्छा। फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट अ ईयर काम किया रॉन्डेवू, और नीचे रूम सर्विस में था ऑलमोस्ट अ ईयर। बस मेरा अरमान था कि मैं कैसे भी करके रॉन्डेवू में काम करूँ। द फ्रेंच, द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट, what do you call it? High end, the best. Even the menus for the guests, the menus पे प्राइस नहीं लिखते थे, तो गेस्ट को पता नहीं होना चाहिए कि मेरा होस्ट इतने पैसे खर्च कर रहा है। तो आप जो चाहे आप ऑर्डर कीजिए, आप प्राइस मत देखना। हाँ, तो लॉबस्टर का प्राइस तो मतलब मेरे 6 महीने की कमाई। हाँ, मैं ट्रे पे 6 बियर उठाता था ऐसे, और थोड़ा शो ऑफ भी करता था। ओके। और 6 बियर गिर गए अंदर। तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली देयर वाज दिस अदर वेटर कॉल्ड थॉमस मनी हु केम एंड सेड, सर इट्स नॉट हिज फॉल्ट। आई सेड, यार ये तो अच्छा टीम मैन है। एंड ही जस्ट नाउ वन ट्रे फेल डाउन, यू नो, एंड ट्रे फेल डाउन। So the thing was that the tray was wobbly. Pong, pong, pong. It had a play. So when you put the beers on top, and I picked it and put it here, it went up. Pong, and all. So Kay said, okay, I forgive you. I would have sent you downstairs again. But before you put beers on the tray next time, check and see if it's a wobble. You cannot have an excuse for anything in this world. There is no excuse. It's always your fault, remember. That's what he taught me. Yeah. Yes. So I'm telling you. आपका जो इंटरव्यू है, सॉरी अभी मुझे आई एम बिजी, बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. I just thought of something. After I left working here, it's the first time I've come back. Really? And that was in which year? 1979. Wow. 43 years. You're coming here after 43 years. That is so cool, and I'm so glad
that you're coming here with me. So thank you so much for this Yeah, lovely. honor. So lovely. I say to myself, I'm glad I did all these things. It gives you an idea of hard work and Yeah. understanding people, observation, knowing what a person is thinking, jumping to being instinctive as an actor. Yeah. I think you become very instinctive when you are noticing things, you're looking around. You're seeing somebody having a conversation, maybe you turn the shoulder. You know you got to be there, like Tom and Jerry, you know. Yeah. So you're very alive. And I think it helps as an actor. My salary was 105 rupees. For a month. Yeah, Wow. tips did good money with it. I should tuck that money away. Yeah. I tucked that money away and I bought my wife a chain, a gold chain, when we got married. With that money, and I bought myself a camera from the money I made over here. And then what happened? Mom was in an accident. Oh, okay. She needed someone to go and sit at the shop. So I went. So, I'm a Sindhi, married to a Punjabi. So for us, like Sunday brunch, Sindhi household is Sindhi kadhi and chawal. Sai Kadi. Yeah, sai bhaji. Sai bhaji, Sai bhaji, kadhi, Sindhi kadhi. And in a Punjabi household, it's rajma chawal, chane chawal. What about a Parsi household? Kya khana banta? Dansa. Ah, okay. How often do you make dansak? Very often. On Sundays or on holidays. Dansak is mutton. Dansak doesn't mean we'll have a chicken dansak. There's no such thing. Yeah. You can make a chicken dansak, but it's a mutton dansak. And when you go to sleep, Do you cook? I do a great boiled egg. Okay. You're also very fond of photography, right? Very. Do you still click pictures On the iPhone. on the iPhone? Today, can I have the privilege of getting a photo session done by you? I hope you're not too expensive though. We'll negotiate. Look at me. Wow, it's a really nice one. Will you airdrop these pictures to me, please? पैसे निकालो. Kitna? This is nice picture. Very nice. तो समझते क्या हो तुम लोग? Yeah. क्या बर्नआउट क्या हो गया? क्या बर्नआउट हो गया? So, how much did you charge back then for per picture? Per picture, no. A portfolio started at 3,000, then it went to 10,000, then it went to 20,000. But that's also many years ago. That was when I was 37, 38. तो उसको भी कितने साल हो गए? This is the rendezvous. So this restaurant was the best restaurant in India. And I used to work here, I used to serve here. There's a session going on. But come here. This is the restaurant. But it's busy today, unfortunately. This was the Harbour Bar I was talking about. Okay. Yeah, Harbour Bar. I just mentioned it. Yes, yes, Harbour Bar. Over here. How are you doing, man? Welcome back home, sir. Thank you. So this used So to be. this used to be the Golden Dragon, and right below this is the big kitchen for Golden Dragon and the room service. Right. Okay, the big kitchen all down. Masala craft. This used to be Indian. Tanjore. Okay. I'm going to disturb somebody. Sorry, hi. Sorry. No worries. Hi, how are you doing? Come here, I'll show you a moment. So I'm standing 2 floors up. Okay, I'm carrying a tray and to room service. Yeah. From up there, I can see a lady coming up to go to someone's wedding. It was my mother. And I made a sound. I said, Jarbanu! That's her name. Yesterday was a 1-year anniversary, death anniversary. Okay. So she's over there and she looks up, who's this? I was wearing a bow tie. And she says, who's that? I said, this is your son, Boman. and then for a second she was carrying a tray, Yeah. standing here like this, 2 floors up. And she looked at me and then she said, bless you. Oh my God. Isn't that great? Such a sweet Isn't story. that great? It's such a simple thing. So My she eyes saw, are moist now. yeah, she didn't lie. She didn't lie. Okay, you're doing an honest day's work. End of story. Yeah. Let's go, guys.
So would you like to have some ice cream now? Let's go. Make you change. What age did you get Munna Bhai? MBB? 44. Yeah. मतलब मेरा भी स्कोप है हीरोइन बनने का. बिल्कुल, मैं हीरो तो अच्छा. नहीं बना, लेकिन the moment you say मेरा टाइम निकल गया तो आपका टाइम निकल गया. तो मतलब उसमें कोई you have only decided your fate ना. Yeah. आप ही ने सोच लिया कि मेरा टाइम निकल गया तो ठीक है, मैं क्यों आपको टाइम दूं? मैं क्यों आपको मौका दूं अगर आपको लगे कि आपका टाइम निकल गया? I was already 20 years into the marriage. When you became an actor. Yeah, so by then you Your bond is very strong. Yeah, हो गया नहीं, हो गई ना बात. हाँ. What about your kids? Oh, they have fun. They're a great company. They're very good sense of humor. Yeah. They like hanging with family. They like hanging with their They used to love hanging with their grandparents, which is a very beautiful thing. I Yeah. see. They didn't think it was uncool to hang with their grandparents. Yeah. I mean, my experience has been like older people are a lot of fun to hang out with. They're great fun. They're Yeah. dying to have fun. Yeah. They don't want to sit with goddamn their phones and sit on Instagram, right? True. they're- And so many tales to tell. And naughty. Yeah. Right. Growing up, you were also surrounded by a lot of women. Yeah. So 5 masis and some God knows how many chachis and my aunt, my dad's sister lived with us, and all my cousins were girls, and it was. But it's good. You understand women better, I think. Yeah. What do you think? What do women want? Women like a little attention. Yeah. If you're not into their shopping, spend half an hour at least. Yeah. They like it. At least my wife does. My wife, well, if I buy her most 90% of the sarees I buy. Really? Yeah. So when I travel, I pick up the 90% of the sarees. I Wow. mean, in fact, in Yeah. the last 10-15 years, I think 100% of the sarees I bought. And any relationship advice? You've been married for now good 40 years? Almost, yeah. Yeah. Any relationship, marriage advice that you would like to give to our audience? थोड़ा preachy लगेगा. चलेगा? हाँ चलेगा क्यों नहीं? डर गई आप? नहीं मैं नहीं डरी. Don't carry an argument over this the next morning. Finish it in the night. Even if it's your fault, say sorry. You're not winning any prizes. You're not winning any lotteries if you won that argument. I won the argument. So what? That's number one. Because in the morning you normally forget what you were arguing about the night before. Yeah. Relationship advice number one. Number two, end it with a joke. I just wanted to say that we find you very All right. Let me get down and meet you. No, it's okay. You just you have your own time. No, we are coming to have ice cream. Same. Nice to meet you, ladies. So what is the most common compliment that you get from women? You remind me of my dad. That's not true. I just saw like 5 women walking up to you and all of them said that we find you very, very cute. They were treating me like I'm their son. Chale. Chalo, let's go. Come on. The weather is hot. Perfect weather to enjoy an ice cream. Of course, let's do this. Who's buying us ice cream now? I'll buy you ice cream. Aye, that's My good. treat. Your treat. अभी जाओ. लाइन कटा नहीं ना किसका? ये तो बोलेंगे कोई एक्टर आ गया लाइन काटा jumping the line. हमें भी लो ना. Let us buy you ice cream. Hope to see you in Thailand. Which ice cream would you like to have? Pista. Pista? One pista and which is your other one? Which is walnut crunch. Bye, Daddy. Okay. So Walnut crunch. हमें बोलो. ये क्या है? ये pista. You go for मेरे pista. लिए. हाँ. अरे. I'll go for walnut. Bye bye. 1953 established. K. Rustam's. Ice cream Ice sandwich. cream, lassi, dahi. Unbelievable. Brabourne Stadium. This is Brabourne building. Right beyond us, Brabourne Stadium. Cricket matches and school sports. यहीं पे होते थे. हम लोग लाइन लगाते थे यहाँ सैंडविच खाने के, आइसक्रीम सैंडविच खाने के.
This is delicious. I'm having the walnut crunch. Were you a regular here at Tere Gully? You should come in the car. One guy takes an order outside, and with the kids, with the grandkids. My grandkids come here. Really? Oh, Yeah. wow. My father-in-law should love to come here. Nice. Thank you so much. This Tere Gully has such a beautiful old world charm, almost 70 years old. And I've seen like a lot of Parsis have restaurants running for so many years, isn't it? As old as they are. Tell me, what is the most cliche thing you've heard, you being a Parsi? And there's so many cliches and stereotypes. Is there any particular cliche that you find very annoying? Annoying? No, I don't No? really know. I think I don't get annoyed very easily, number one. Right. Number two is the cliche thing is, one must be very rich. Okay, now that I have a green signal from you that you don't get annoyed, I'm going to play a fun game with you. Oh boy, I get annoyed. Yeah. How bawa are you? Okay, that's the game. I am reasonably bawa. Yeah? I am reasonably bawa in the sense that I like tradition. Right. I like okay. tradition. I'm proud of the heritage, and that's what how it should be. Yeah. So, what according to you is Majani life? Majani life is actually family, food, drink, dance, sing, help others, and go and sleep well. Sleep well. Sleep well. Yeah. Okay, if you have to choose one between Patrani Machi and Amritsari Machi, what would you Patrani Machi. But now that I'm doing Masoom, I think for this season, Amritsari Machi. Okay. Yeah. All right. Character में हूँ ना? हाँ. Okay. So, for how many years do you retain the plastic of your car seats or your furniture? ना जल्दी निकाल दे. अच्छा. नहीं क्या enjoy it. ये प्लास्टिक से क्या करेगा? फर्नीचर हाँ. बचाएगा. हाँ. कब तक बचाएगा? और वो Correct है. चीचू होता है, मुझे मजा नहीं आता. निकाल दो, फाड़ दो, फेंक दो. Use things. लोग खरीदते हैं और कभी कपड़े पहनते ही नहीं. क्यों खरीदा फिर? हाँ. Okay. What is the most vintage thing you own? है एक जीन्स अपना. बहुत पुराने जीन्स है. Fit नहीं आते हो? नहीं कोई बात नहीं, लेकिन comfy है. अच्छा. 3 rules that every Parsi must abide by. Respect your heritage, give back. You've got a lot from the community. You have a lot that you get because by virtue of a reputation, by virtue of property, by virtue of so many things, houses, give back. And you can only give back if you abide by our forefathers and their great generous attitude. Right. If you don't respect that, you don't deserve to get. You can't take and not give back. Okay. One last Parsi thing you have to do. You have to say something really nice about me in Parsi. Language. See, Parsis don't lie. Oh! Parsis don't lie, but I'll say this. It was a great interview. Yes. Really, honest to God. Lovely time I had. Had so much fun. Actually. And I would like to know about Masoom now. ना इंटरव्यू किया मासूम के बारे में कुछ बोला ही नहीं. नहीं अभी save the बोलने best for जाते the वक्त. last. हाँ जी बोलो. क्या exciting है, काफी ऐसे thriller types लग रहा है. I think you'll see a wonderful drama, Yeah. a wonderful mystery, a wonderful thriller, very intriguing, and I can guarantee you'll see all 6 episodes in one match. It's a great family drama. Yeah. It was great to act in. It was great to perform. That's what's important. If the actors are not enjoying what they're doing, it will show on screen. Yeah. We enjoy watching you on the big screen, and I'm sure we're going to enjoy watching you on an OTT platform as well. Other than Masoom, are there any more films or projects that we should be watching out for? Unchai with Mr. Bachchan, Anupam Kher, Danny Denzongpa Sahab, myself, Neena Gupta, Sarika, and Parinidhi Chopra. What a wonderful lineup and great story, Suraj Barjatias. And then soon after that, next year maybe we're still shooting for Donkey. I finished most of my sections of Donkey. Yeah. And then I'm starting my own production, which I'll be directing. So, Oh, yes. So pre-production will start in a couple of months. Okay. Actor, director, writer, donning all the hats. It's been wonderful chatting with you today and walking down the memory lane with you. बहुत Thank you. मजा आया आपके होटल में जाकर, आपके work space में रहकर, and enjoying this wonderful ice cream. Thank you so much. Thank you for your time with us and really had a great time. God bless you. अभी एक reel बाकी है. अरे बाप रे.
जी जनाब। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े लोगों की हम बायोग्राफी देख रहे हैं या उनके इंटरव्यूज सुन रहे हैं या उनके बारे में जान रहे हैं, बिल्कुल, तो मतलब इतनी स्ट्रगल लाइफ यहाँ से उठकर आए हैं। अच्छा, इनके बारे में तो मैं अक्सर मतलब मेरे जहन में आता था कि ये तो पुराने एक्टर हैं नहीं, यानी कि पुरानी फिल्मों में ये कभी भी नहीं आए। सही। लेकिन ये इसी एज के अंदर एकदम इतने फेमस हो गए। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। सही। मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई चाइल्ड एक्टर होता है, कोई यंग होता है, फिर वो बूढ़ा होता है एक्टिंग करते करते। सही है। लेकिन अभी तो ये बूढ़े नहीं है, मतलब मैच्योर है, लेकिन ये इस एज के अंदर इतने फेमस हुए। अच्छा, ये अचानक ही फेमस हुए? वही मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे राना का कैरेक्टर था, बहुत मतलब बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा, एक तो इत्तेफाक ये हुआ कि मुन्ना भाई खुद एक ब्लॉकबस्टर हो गई। ब्लॉकबस्टर हो गई। उसके बाद 3 इडियट्स में भी जो उन्होंने कैरेक्टर किया डॉक्टर का, उसके बाद तो लाइनें लग गई। और कौन सी फिल्म ऐसी होती थी जिनमें ये ना हो? और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने शायद इन 2 मूवीज से ही इनको जाना है। इससे पहले अगर कोई मूवी आई होगी तो आई होगी, मैंने नहीं देखी थी। मैं बता रहा हूँ ना कि मुन्ना भाई हो गई या 3 इडियट हो गई, उसके बाद तो कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें बाप के रोल में ये नहीं है, जिसमें टीचर के रोल में विलन भी है, विलन के रोल में। मतलब हर फिल्म, यानी ऐसा लगता था कि बॉलीवुड की हर फिल्म का पार्ट बन गई है। फिल्म अधूरी है इनके बाद, इनका होना लाजमी है। अच्छा, इनका मतलब एक अपना स्टाइल, इनकी अपनी एक आवाज़, इनका अपना एक एक्टिंग की, मतलब मैं हैरान हूँ कि इस उम्र में भी, इस मैच्योरनेस में भी इंसान इतना फेमस हो सकता है। बहुत कम लोगों के साथ ये नसीब। बहुत पहले हमने बात करी थी कि जब इंसान यूनिक होता है तभी वो फेमस होता है या वायरल होता है। यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने बड़े विलन्स देखे हैं, बड़े सपोर्टिंग कैरेक्टर्स देखे हैं, बाप के कैरेक्टर्स भी करते हुए हर एक के बाद दूसरे बंदे को दिखते हैं, नए नए चेहरे दिखते हैं। इनका स्टाइल थोड़ा यूनिक है। इनका स्टाइल कुछ ऐसा, आपने देखा था ये हंसते थे जब इनको मुन्ना भाई का गुस्सा आता था, जो कहता है कि इनसे बोलिएगा कि इनका वो मैंने भर दिया है, वो बेहोश होते हैं। मतलब इनका एक गुस्से में हंसने का स्टाइल, 3 इडियट में भी जो इनका गुस्सा था वो एक नया ही पन दे दिया उन्होंने, वो एक नया ही मजा आ गया उसमें। तो वो जो यूनिकनेस होती है ना, उससे बंदा अपने जहन में नहीं छप जाता है, याद रह जाता है, और उसी के बाद वो बंदा फेमस हो जाता है। अच्छा, बाप के कैरेक्टर किसने करे होंगे, पता नहीं कितने लोगों ने। सिंपल बिल्कुल आए और चले गए। लेकिन वाकई इनका एक स्टाइल था जो बहुत ही यूनिक था। जो टीचर बने थे, ये प्रिंसिपल थे, और फिर उसके बाद 3 इडियट में भी, फिर उसके बाद कई फिल्में, बेशुमार फिल्में। अच्छा, ये आज हमें पता चला कि वेटर थे ये यार। आप बताएं तो। मतलब हैरान कुन, बहुत बड़ी बात। क्या स्ट्रगल रही होगी इनकी, क्या इनकी लाइफ रही होगी। अच्छा, इस तरीके से ये बॉलीवुड तक गए होंगे। एज में ये आए हैं, मेरे हिसाब से इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितना स्ट्रगल करा होगा, उसके बाद जाके इन्होंने अपना करियर बनाया। बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंसान अगर अच्छा हो ना, अच्छा से मुराद हेल्प किसी की करने वाला, किसी के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करने वाला। देखिए, 10,000 लोग आते हैं, 10,000 लोग टैलेंटेड भी होते हैं, 10,000 लोग जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन वो मकाम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो मकाम सबके लिए नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें सब तो करते हैं। कौन ऐसा शख्स है जिसने मेहनत नहीं की होगी फिल्मों में आने के लिए, नहीं बन सका, उसकी मेहनत पे कोई शक नहीं। कौन ऐसा शख्स है जिसने मतलब अपना पूरा खून पसीना नहीं लगा दिया, टाइम नहीं दिया होगा, नहीं बन सका। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंसान लोगों के लिए कुछ करे, कहीं ना कहीं इंसान लोगों के लिए कुछ करे, कहीं ना कहीं इंसान किसी की हेल्प करे, कहीं ना कहीं इंसान इस माशरे को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूँ शायद ये ज़िंदगी में उसे कामयाबी मिलती है किसी की दुआओं की वजह से भी। मेहनत अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह पे है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं किसी और शक्ल में मिलता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो देखकर इनकी बड़ी हैरान होती हूँ, चाहे वो मनोज मुंतशिर हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हम दूसरे एक्टर्स के बारे में भी देखा और जाना कि कहाँ से वो लोग आए थे। मैं ये सोचती हूँ इनका ज़र्फ इतना आला ज़र्फ के कैसे हैं कि मतलब इतनी स्ट्रगल के बाद हमारे यहाँ अभी बहुत वायरल होती है अलीज़ा शाह। तो उन्होंने तो बिल्कुल थोड़ी सी उनको कामयाबी मिली, थोड़ी सी वो पॉपुलर हो गई, थोड़ी सी वो उनके ड्रामास 1-2 वायरल हो गए, ड्रामा सीरियस। उसके बाद से उन्होंने तो हर किसी से बदतमीजी, मिसबिहेव, बात नहीं सुनना, शूटिंग पे से ऐसे ही उठकर चली जाती हैं बिना बताए। 1-2 केस भी हुए अभी उनको, 1 केस भी हो गया इसी बात को लेकर। ये कौन लोग हैं कि एक तो इतनी मेहनत कर आते हैं, ऊपर से आप देखें तो किस तरीके से ट्रेन कर रहे थे उनको, गले लगाना, बात करना, हम्बलनेस,
मतलब इन लोगों के डीएनए में हो जैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी इनको मजीद तरक्की मिलती है। हमारे यहाँ पे 2 से 3 ड्रामे करने वाले समझते हैं कि हम सुपरस्टार बन गए, फिर उसके बाद उनके एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं, फिर उनके जवाल शुरू हो जाता है। आप शाहरुख खान को देख लें, क्या अच्छा जॉन इब्राहिम को देख लें यार, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं से उन्हें ये फील नहीं होता कि कोई मैं हीरो। शाहरुख की तो मैंने एक वीडियो देखी, बकायदा चैट है, चैट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एरोप्लेन वगैरह, उसके अंदर वो आ रहे हैं अपने फैंस से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बहुत बड़ी बात, मतलब क्या सरप्राइजिंग। अच्छा इंसान बड़ा अंदर से होता है, अंदर से होता है, मतलब रिजल्ट से होता है। आप कितने बड़े इंसान हो ये आपका अंदर होता है। बाहर से जो लोग बड़े दिखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप इंसान कितने बड़े हो, आप लोगों की कदर कितनी करते हो। अच्छा, जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ज्यादा बड़ेपन का मुजाहरा करता है। समंदर कितना खामोश होता है और छोटे छोटे नदियाँ नाले कितना शोर करते हैं। आज मतलब इनका मैंने फर्स्ट टाइम एक इंटरव्यू देखा, जिसमें मुझे इनके बारे में नेचर का थोड़ा सा आइडिया होगा मुझे। मैं बहुत हैरान हूँ। इनकी एक फिल्म है बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, हौसला का घोंसला। हाँ, मतलब क्या फिल्म है। और बाकी इनकी कई Acting। हज़ारों, मैं तो कहती हूँ कि बेशुमार फिल्में हैं और एक्टिंग अपने आप में कमाल है, बिल्कुल बहुत आला एक्टर हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था। कर्ली टेल्स ने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया। तेरी गली। वैसे तो वो विजिटिंग कराती है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक अंदाज था। बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।